हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के लिए न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हम इस टॉपिक में एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ सीक्वेंस एंड सीरीज एंड मींस उसका टॉपिक एपी डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक नोटेशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स देखेंगे सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या है बेटा? सीक्वेंस है अ प्रोग्रेशन, कोई भी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस whose terms follow a certain pattern। मीन्स बेटा कोई भी टर्म इन अ पर्टिकुलर पैटर्न में लिखोगे उसे सीक्वेंस बोलेंगे। कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न मीन्स लाइक दिस टर्म 1 3 5 7 9 गैप है विद द टू टर्म्स गैप है 1 3 5 7 9 दिस इज अ सीक्वेंस। कोई कंपल्शन नहीं है टू गैप, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2 2 into 4 2 4 into 2 8 8 into 2 16 16 into 2 32 दिस टर्म इज आल्सो नोन एज सीक्वेंस। प्रोडक्ट ऑफ 2 है। नेक्स्ट गैप देखो पर्टिकुलर पैटर्न मीन्स first gap 1 then 2 then 3 then 4 1 gap 2 gap 3 gap 4 gap this is also a particular pattern, therefore this term is also known as sequence। कुछ भी लिखोगे with comma symbol this term is known as sequence। clear है term? now series है बेटा if a1 a2 a3 is a sequence with commas term sequence है then expression a1 plus a2 plus a3 up to so on is called series। expression is called series we use symbol plus like commas लगाओगे then this is a sequence but plus apply करो 1 plus 3 plus 5 plus 7 this term is a series, this expression is series। similarly 1 2 4 7 up to 11 with plus symbol है therefore this is series। sequence means commas terms use करोगे, series means plus symbol use करोगे बेटा। now basic question for sequence, write the first three terms of the sequence whose journal term is given। first three terms लिखनी है बेटा। journal term given है an is equal to n square minus n plus 1। देखो बेटा वैल्यू given है वैल्यू ऑफ an is equal to n square minus n plus 1। first three terms means value of n, put value of n is equal to 1। n अनपुट करोगे बेटा this is 1 minus 1 plus 1 कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 1। देन n2 पुट करो बेटा, n2 पुट करोगे दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 4 minus 2 plus 1 दिस इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट टर्म बेटा a3 मींस 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 दिस इज 9 minus 3 plus 1 6 plus 1 7। देखो अवर पैटर्न इज 1 3 7 means option B is your final answer। कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन, सीक्वेंस क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ n 1 2 3 4 पुट करोगे दिस टर्म इज नोन एज सीक्वेंस। अवर सीक्वेंस आंसर इज 1 3 7 means B option is your final answer। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लेट द सीक्वेंस बी डिफाइंड एज फॉलोज। सीक्वेंस गिवन है बेटा, a1 given है 1, an given है an minus 1 plus 2 for n is greater than is equal to। बेटा गिवन सीक्वेंस है a1 1 given है and result given है an is equal to an minus 1 plus 2 result। देखो बेटा वैल्यू ऑफ a1 given है 1, a1 is 1, देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ऑलवेज 1। नाउ फाइंड आउट करो बेटा वैल्यू ऑफ a2, 2 फाइंड आउट करोगे। For 2 we substitute n as a 2, n2 put करोगे बेटा, therefore this term is 2 minus 1 is 1 plus 2। value of a1 is 1, value of this term 2, therefore a2 is equal to 3। second sequence is 3। now our answer is 1, first term 1 है, second 3 है, means first a and b options are not possible, b or c 1 3। नाउ थर्ड ऑप्शन चेक करो बेटा, थर्ड ऑप्शन फॉर थर्ड टर्म फाइंड आउट करोगे बेटा a3। फॉर a3 वी पुट n एज अ 3 एंड दिस टर्म इज आल्सो 3, दिस टर्म इज 3, देयरफॉर दिस टर्म इज इक्वल टू a3 minus 1 plus 2 means a2 plus 2, a2 plus 2। value of a2 is a2 3 plus 2 means 5 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ a3 is 5 means थर्ड टर्म इज 5। सीक्वेंस फर्स्ट टर्म 1 है, देन 3 देन 5।
देखो बेटा नेक्स्ट टर्म 1 3 5 इज ओनली सी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर, सी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर, सी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा, सी ऑप्शन फाइनल आंसर है। क्लियर है टर्म। नाउ देखो बेटा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच इज नोन एज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी। A sequence is called an arithmetic progression, means AP बोलोगे, if the difference of each term is same, means common difference is same. Difference of each term means common difference is same. For example, 2 7 difference is 5. 7 minus 2 करोगे बेटा difference 5 है. 12 minus 7 difference 5 है. 17 minus 12 difference 5 है. This term difference 5 है. देखो difference always 5 है, means common difference 5, then this term is known as क्लियर है नंबर, एपी टर्म आ जाएगी बेटा। नाउ जर्नल टर्म ऑफ एपी, जर्नल टर्म मींस nth टर्म ऑफ एपी, लाइक फर्स्ट टर्म इज ए, नेक्स्ट टर्म a प्लस डी, नेक्स्ट टर्म a प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म a प्लस 3d एंड अप टू सो ऑन। देखो बेटा फर्स्ट टर्म a1 a है, a2 a प्लस d, a3 1 नंबर लेस 2d, a4 1 नंबर लेस 3d। That means an is our standard result. An is equal to a plus n minus 1 into d. This is our journal term. 10th class topic भी है बेटा, बहुत easy topic and important for term 1 भी है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है objective questions। Which term of the sequence this is 124? देखो बेटा value of a given है बेटा 2, sorry value of a is 4, given है बेटा value of a 4 and value of d given है बेटा 9 minus 4, 9 minus 4 is 5, common difference is 5. Which term means n find out करना है बेटा, n find out करना है and the given term is 124, means nth term is given है बेटा 124, nth term is 124। formula apply करो बेटा for nth term, formula for nth term is a plus n minus 1 into d is equal to 124 हो जाएगा वैल्यू ऑफ nth टर्म, वैल्यू ऑफ nth टर्म इज 124, वैल्यू ऑफ a 4, n minus 1 वैल्यू ऑफ d 5 and this term is equal to 124 because nth टर्म is given, nth टर्म given है बेटा, nth टर्म वैल्यू 124। 4 शिफ्ट करोगे बेटा, 4 शिफ्ट करो बेटा, 4 शिफ्ट करो, दिस नंबर इज n minus 1 into 5 is equal to 120। now n minus 1 is equal to n minus 1 is equal to 5 cancel हो जाएगा, this term is 5 to the 10, 5 4 the 20, this term is 24, therefore value of n is 24 plus 1, this number is equal to 25, therefore value of n is equal to 25, मतलब 25th is your answer, 25th term is your final answer। क्लियर है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट टर्म के। नाउ बेटा देखो 6th टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन है 18, 9th टर्म ऑफ एपी इज 12 गिवन है, फाइंड आउट करनी है 15th टर्म, 15th टर्म फाइंड आउट करनी है बेटा। 6th टर्म ऑफ एपी इज 18, 6th टर्म मींस a 6 is equal to 18 गिवन है, a 9 is equal to 12 गिवन है। 6th टर्म मींस बेटा लिखोगे a plus 5d, a plus 5d means 6 minus 1d, 6 minus 1d is 5d। similarly a plus 9 means a plus 9 minus 1 into d, 9 minus 1 means 8d is equal to 12, 9 minus 1 means 8d is equal to 12। सिंप्लीफाई करो बेटा, a सब्ट्रैक्ट करोगे, टर्म a कैंसिल हो जाएगी, दिस नंबर इज इक्वल टू माइनस 3d इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू माइनस 2, वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू माइनस 2, बेटा वैल्यू ऑफ d हो जाएगी माइनस 2। नाउ पुट करो इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन पुट करो बेटा, वैल्यू ऑफ a आ जाएगी a प्लस 5 इंटू डी माइनस 2 इज इक्वल टू 18, a minus 10 is equal to 18, value of a 28, value of a is 28, a 28 हो जाएगा, d minus 2 हो जाएगा, and find out करना है बेटा 15th term,
15th टर्म फाइंड आउट करनी है बेटा। 15th टर्म मींस a प्लस 14d। फाइंड आउट करोगे वैल्यू ऑफ a 28, 14 वैल्यू ऑफ d -2। दिस टर्म इज इक्वल टू 28 minus 28। दिस नंबर इज इक्वल टू 0 मींस 15th टर्म इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। 15th टर्म 0 मींस ए ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर बेटा। ए ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर है क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इफ in an AP, if mth term is n and the nth term is n, where m is not equal to n, find the pth term। pth term find out करोगे। सिमिलर क्वेश्चन है but in form of m and n। चेक करो बेटा। mth term is n, mth term is n means a plus m minus 1 into d is equal to n। nth term is m, nth term is m, nth term means a plus n minus 1 into d is equal to m। बेटा सॉल्व करोगे, साइन चेंज करोगे, साइन चेंज, a कैंसिल हो जाएगा बेटा, d कॉमन आ जाएगा, d कॉमन बेटा, d कॉमन आ जाएगा। दिस टर्म 1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस m। 1 कैंसिल हो जाएगा बेटा। वैल्यू ऑफ d फाइंड आउट करोगे, वैल्यू ऑफ d फाइंड आउट हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू d m माइनस n, माइनस कॉमन करो बेटा, m माइनस n, m माइनस n कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू m, वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ d इज माइनस 1, वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर है बेटा? वैल्यू ऑफ d माइनस 1। नाउ वैल्यू पुट करो d इन फर्स्ट एक्सप्रेशन, पुट करो इन फर्स्ट टर्म, वैल्यू ऑफ a आ जाएगी बेटा। नाउ फर्स्ट टर्म पुट करोगे a प्लस m माइनस 1 इंटू वैल्यू ऑफ d माइनस 1 इज इक्वल टू n। क्लियर है बेटा? वैल्यू ऑफ d पुट करोगे इन फर्स्ट एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ d पुट करोगे, आंसर हो जाएगा बेटा a माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू n। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू m plus n minus 1। This is the value of a। Now find out करनी है बेटा value of pth term। What is the value of pth term? pth term means बेटा a plus p minus 1 into d। This is our pth term। Value of a, value of a is m plus n minus 1 plus value of d, value of d is minus 1, वैल्यू ऑफ d is minus 1। पुट करोगे बेटा, दिस नंबर इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 माइनस p माइनस माइनस प्लस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज योर pth टर्म, दिस टर्म इज योर pth टर्म एंड pth टर्म इज योर फाइनल आंसर। दिस टर्म इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है टर्म? फाइनल आंसर है बेटा m प्लस n माइनस p, m प्लस n माइनस p, n plus m minus p same term, n plus n minus p, मतलब C option is your final answer। m plus n और n plus m is the same term। C option is your final answer। Clear है स्टूडेंट्स? बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। In an AP, next question है, in an AP the pth term is q and the pq plus pqh plus term is 0, then find qh। देखो बेटा, pth term is q given है, pth term is q means a plus p minus 1 into d is equal to q given है बेटा। this term is given term। next term भी given है, p plus qth term is 0, p plus qth term a plus p plus q minus 1 into d is equal to 0। Now p minus 1 बेटा, p minus 1 स्टेप चेक करना है बेटा, बड़ा अच्छा स्टेप है आपके लिए, बहुत अच्छा स्टेप है। a प्लस, देखो बेटा p माइनस 1 इंटू सेपरेट करो, देखो बेटा सेपरेट करो p माइनस 1 इंटू डी प्लस क्यू डी सेपरेट करो, प्लस क्यू डी सेपरेट इज इक्वल टू 0। स्टेप क्लियर
देखो p माइनस 1 इंटू डी सेपरेट लिखो एंड q इंटू डी, दिस q इंटू डी सेपरेट, q इंटू डी. Now value of this term is a plus p minus 1 into d value. This is our qth term. Value of this term is equal to q. Value of this part is a plus p minus 1 into d is equal to q. Therefore we write this term as a q plus qd is equal to 0. बेटा शिफ्ट करोगे वैल्यू ऑफ d, qd is equal to minus q, कैंसिल हो जाएगा बेटा, d is equal to minus 1, d minus 1 हो जाएगा बेटा. वैल्यू ऑफ d पुट करो इन दिस एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ d पुट करो बेटा इन दिस एक्सप्रेशन, पुट इन फर्स्ट करोगे, वैल्यू ऑफ a हो जाएगी बेटा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज माइनस 1 इज इक्वल टू q. वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट करोगे, दिस इज माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू q. देयरफॉर a इज इक्वल टू p plus q minus 1. This term is the value of p, a, sorry, value of a. Now find out करनी है बेटा value of qth term. qth term find out करोगे, qth term बेटा किस तरह आ जाएगा, qth term is equal to a plus q minus 1 into d. Now value of a पता है बेटा, value of a is p plus q minus 1 and value of d is also minus 1. a and d clear है, वैल्यू पुट करोगे बेटा, दिस नंबर इज p प्लस q माइनस 1 माइनस q प्लस 1. बेटा q कैंसिल हो जाएगा, 1 भी कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म इज p, मतलब qth टर्म इज इक्वल टू p, qth टर्म इज इक्वल टू p. दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी इज योर फाइनल आंसर. बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्म 1. क्लियर है क्वेश्चन. नेक्स्ट हम देखो, how many terms are identical? Identical means common terms. In two APs given है बेटा 2468 up to 100 terms and 369 up to 80 terms. 369 up to 80 terms. देखो बेटा identical terms given है. Now first sequence up to 100 term है बेटा, up to 100 term. Now 2, 4, 6, 8 up to 100 term है. 2, 4, 6, 8 10, 12 up to so on 100 term. बेटा 100 term find out करो. 100 term means a 2 है बेटा in this case, d is also 2. 100 term means 2 plus 100 minus 1 into d2. सिंप्लीफाई करोगे बेटा, दिस इज 2 plus 200 minus 2 and कैंसिल हो जाएगा, 100 term is 200. जो 100 टर्म है बेटा 200 हो जाएगी. 100 टर्म किससे इक्वल हो जाएगी, 200. नाउ फॉर नेक्स्ट सीक्वेंस बेटा, नेक्स्ट सीक्वेंस गिवन है 369 अप टू 1880. बेटा नेक्स्ट सीक्वेंस 369 अप टू 80 टर्म्स. देखो 369 12 हो जाएगी नेक्स्ट टर्म, 369 12 अप टू 80 टर्म्स. a is 3 in this case and value of d is also 3. Put करो बेटा, find out करो 80th term. 80th term means this is 3 plus 80 minus 1 into 3. This number is equal to 3 plus 240 minus 3. Number is 240. मतलब its last term is 80th term means last term is 240 and its last term is 200. And now how many identical terms? First identical number between these two sequences. What is the first identical number between these two sequences? First identical number is 36 and 246 means first identical number is 6. First identical number is 6. And the second identical number is 12. Second identical number 12. Second identical term is 12. Second identical term 12 हो जाएगी बेटा. Now first term 6, second term 12, identical term means common term. Next term obvious है 18 हो जाएगी up to so on. Identical terms है, its last term is 200, its last term is 240, therefore its identical term is less than 200 हो जाएगी. Because its last term 200 है, then after 200 कुछ भी identical नहीं आएगा. After 200 बेटा कुछ भी identical नहीं आएगा.
नाउ फर्स्ट टर्म 6 है, सेकंड टर्म 12 है, 18 है, जो भी लास्ट टर्म आएगी बेटा, जो भी लास्ट टर्म आएगी लेस देन 200 आ जाएगी, लेस देन 200 मींस हाउ मेनी टर्म्स फाइंड आउट करनी है बेटा, 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी 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 इज ऑल्सो 6, लेस देन 200 लिखोगे बेटा, वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट हो जाएगी फ्रॉम दिस नंबर, दिस टर्म इज इक्वल टू 6 प्लस 6n माइनस 6 लेस देन 200, cancel beta, 6n is less than 200, now value of n is less than 200 by 6, 200 by 6 means 33.33, कुछ नंबर आ जाएगा, less than 33.3 means value of n is 33, 33 terms are identical between these two sequence which is 6, 12, 18 up to so on, therefore 33 term मतलब C option is your final answer बेटा, सी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टर्म बेटा, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, सिलेक्शन करोगे बेटा टर्म्स इन एन एपी, सिलेक्शन पॉसिबल है व्हेन सम इज गिवन, व्हेन सम इज गिवन देन सिलेक्शन इज पॉसिबल, देन वी यूज द फॉलोइंग टर्म्स, फॉर थ्री टर्म्स वी यूज ए प्लस डी, ए माइनस डी एंड विद द कॉमन डिफरेंस डी, with the common difference d, and for four terms we use a minus d, a plus d, common difference 2d, a minus 3d and a plus 3d, four terms use हो जाएंगी, and for five terms, three terms बेटा सेम आ जाएंगी, three terms सेम, for odd number common difference d है, next term d add हो जाएगा, d subtract हो जाएगा, these terms are used for sum of, used when sum is given, these numbers are used, these selection are used when sum is given, clear hai with common difference d. Now question based on these terms, the sum of three consecutive number in an AP is given, beta given hai sum of three consecutive numbers in an AP given hai, sum given hai beta 18, sum given hai for three numbers, if sum is given when then we use selection of terms, and the product is 192 bhi given hai, product 192 bhi given hai, sum of three consecutive numbers in an AP is 18. Now, देखो assume करो first number a minus d, next a and last a plus d. Sum is 18. Sum is 18 means बेटा a minus d plus a plus d is equal to 18 use करोगे बेटा, dd cancel, 3a is equal to 18, value of a is equal to 6. Value of a is equal to 6. Now, and their product is 192, and their product is 192, product of three number is a minus d, a plus d is equal to 192. Now a minus b into a plus b formula apply हो जाएगा, this formula is a square minus d square into a is equal to 192, formula यूज होगा ना बेटा, a minus b into a plus b, a square minus d square into a is equal to 192, value of a 6 put हो जाएगा, this is 36 minus d square, 36 minus d square into 6 is equal to 192, बेटा कैंसिल करो, 3 6 का 18, 1 2 3 4 का 12, therefore 36 minus d square is equal to 34. Now value of d square, बेटा value of d square 36 minus 34 is equal to d square beta, therefore value of d square is equal to 4, sorry this term is 2, this term is 2, this is 32, sorry my mistake, 192 divide करोगे this number is 32, sorry it's my mistake, this is 3 6 into 2 32, 32 is equal to d square, value of d square is equal to 4 beta, therefore value of d is equal to plus minus 2. Plus minus 2 beta, a 6 है, value put करो in expression, value put करोगे beta in the expression, the first number is, if we use a 6 and d 2, then answers are a 6 and d 2 put करो in this expression, put करो a 6 and d 2, our expression is 4 6 and 8, फाइनल आंसर 4 6 8 अगर यूज करोगे
and D minus 2 यूज करोगे बेटा, A 6 and minus 2, this term is 8 6 4, means final answer है बेटा 8 6 4 and 4 6 8, 8 6 4 and 4 6 8. A option is your final answer बेटा, A option is your final answer. क्लियर है बेटा, बहुत इजी. सिलेक्शन टर्म करो, वैल्यू पुट करो, आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है. डिवाइड 28 is divided into 4 parts. 28 is divided into 4 parts which are in AP. बेटा लैंग्वेज चेंज करो, लैंग्वेज सुनना. If we says that the sum of 4 number is 28, which means same term है बेटा. Sum of 4 number is 28, or we write 28 is divided into 4 parts. The sum of 4 number is 28 which are in AP, or we write 28 is divided into 4 parts. Means sum of 4 number given at 28. The ratio of product of first and third term and the product of second and fourth term is this number. देखो बेटा, sum of 4 parts given है बेटा 28. Sum of 4 parts 28 given है बेटा. Now let करो बेटा. 4 number is A minus 3D, A minus D, A plus 3D, A plus D, A plus 3D. Let करोगे numbers because its sum is given. Sum given है, so that we let this term. Now sum given है बेटा, expression use करो A minus 3D, A minus G, A plus D and A plus 3D is equal to 28. 3D कैंसिल हो जाएगा, D कैंसिल हो जाएगा. 4A is equal to 4A is equal to 28. Value of A is equal to 7 बेटा. Value of A is 7 हो जाएगा. And the next condition is, and the ratio of product of the first and third number. First and third number means A minus 3D into A plus D. देखो first number is A minus 3D and third number A plus D. Product of first and third term to the product of second and fourth term. To the product of second and fourth term. Second term beta A minus D and fourth term means A plus 3D is equal to 8 by 15. Is equal to 8 by 15 given है बेटा. मल्टीप्लाई करो एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बेटा, इक्वेशन आ जाएगी, आंसर हो जाएगा. देखो बेटा सॉल्व करोगे. दिस टर्म इज ए स्क्वायर माइनस AD minus 3AD plus minus 3D square whole divided by A square minus cross A square plus 3AD minus AD minus 3D square is equal to 8 by 15. बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो. दिस नंबर इज 15 A square minus 4AD minus 4AD. Sorry, this is A plus D. This is AD. A square plus AD minus 3AD minus 3D square and A square plus 3AD minus AD minus 3D square. This term is 2AD beta. This number is 2AD minus 3D square is equal to 8 into A square plus 2AD minus 3D square. Now multiply करो बेटा. This number is 15A square minus 30AD minus 45AD square is equal to 8A square plus 16AD minus 24D square. देखो बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे. दिस इज 7A square minus 46AD minus 24 minus 21D square is equal to 0. Now value of A put करो बेटा. Value of A is 7. 7 put करोगे. Value of A बेटा, value of A 7 put करो. This expression is A 7 है बेटा. A 7 put करोगे. 7 square 49 into 7 343 minus 46 into 7 2 7 for the 28 plus
4 322D क्लियर है, माइनस 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 21D स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा सॉल्व करो एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे बेटा, दिस टर्म इज ऑल्सो रिटन एज 21D स्क्वायर माइनस 3 माइनस कॉमन हो जाएगा बेटा 322D माइनस 343 इज इक्वल टू 0। नाउ मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, देन वैल्यू ऑफ D आ जाएगी बेटा। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, इन दिस केस मिडिल टर्म स्प्लिट करो बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, दिस नंबर इज इक्वल टू 21D स्क्वायर प्लस 343D माइनस 21D माइनस 343 इज इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है फैक्टर्स। नाउ 7D कॉमन आ जाएगा बेटा, दिस इज 3D प्लस 49 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा बेटा, 7 कॉमन आ जाएगा बेटा, दिस इज 3D प्लस 49। नाउ वैल्यू ऑफ D आ जाएगी बेटा फ्रॉम दिस टर्म 1 एंड वैल्यू ऑफ D हो जाएगी बेटा माइनस 49/3। पॉजिटिव टर्म D यूज करोगे, अगर D पुट करोगे बेटा, देखो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, D1 एंड A7 बेटा, D1 एंड A7 पुट करो, D1 एंड A7 इन ग्रेटेस्ट नंबर पुट करो बेटा, इन दिस पार्ट D1 एंड A7, D1 एंड A7 ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट नंबर, नेगेटिव नंबर ग्रेटेस्ट नंबर नहीं बनाएगा, एंड AD पुट करोगे बेटा, वैल्यू ऑफ A देखो बेटा, वैल्यू ऑफ A प्लस 3D पुट करोगे, वैल्यूज पुट करो इनटू A प्लस 3D, दिस नंबर इज 7 प्लस 3 इनटू 1, our greatest number is 10 and 10 means C option, 10 means C option is your final answer। क्लियर है बेटा? बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो भी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, एपी विद सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी। थैंक यू स्टूडेंट्स।